Breaking input coming in, the controversy over former Delhi Minister Atishi's alleged derogatory remarks on Guru Sahib has escalated, triggering protests and formal complaints across multiple states. The Shiromani Akali Dal has filed a complaint with the police demanding a criminal FIR. The Delhi Sikh Gurudwara Management Committee has also approached Delhi Police seeking legal action against the former Delhi Chief Minister. Meanwhile, the Haryana Gurudwara Management Committee has taken the matter to the Sri Akal Takht in Amritsar, the highest temporal seat of Sikh authority. And we'll listen in to a reaction. आम आदमी पार्टी ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੱਧਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮਦੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। And we are joined by Nivedita Singh on this broadcast. Nivedita, what more can you tell us? So, Atishi is still not stated her side officially to the Delhi Assembly, and the entire episode has been sent to State Forensic Department for testing the what she exactly said. Virender Gupta, the Speaker of the Delhi Assembly, has sent the matter to the Forensic Department for inquiry, and the report is expected in the next 15 days. The entire issue started on Tuesday when a discussion was on a program that was organized by Delhi government in November. Atishi, however, was demanding that instead of holding discussion on other issues, the Delhi government, which is in control of BJP right now, should hold a discussion on air pollution in the national capital, which is a major issue right now. And we have seen severe air days in December and November. So Atishi was demanding that there should be a discussion on air pollution in the Delhi Assembly. It is also important to note that the discussion was also scheduled for the day. But yeah, when the Assembly was not responding to her request, she became angry and said certain words, which is still not very clear. Because the Assembly has not acknowledged what she has said so far. The Speaker has sent the video of her speech to the Forensic Department for inquiry. The Aam Aadmi Party is saying that while the BJP is protesting against Atishi for her comment, the Aam Aadmi Party has now filed a complaint against the BJP MLAs, including Minister Kapil Mishra, for using certain words along with Guru's name, saying that while Atishi has not said anything against which is derogatory for the Guru, it's the BJP who is repeatedly associating the words with the Guru's words. And now the complaint has been filed officially from both the sides. However, in the last 2 days, Atishi has not made any official statement to the Delhi Assembly so far, even though the Speaker Virender Gupta has repeatedly asked her to do so. Right, Nivedita. Nivedita, I would request you to stay on as we are playing some political reactions. आतिशी जी द्वारा जो अपमानजनक भाषा का हमारे गुरुओं के लिए उपयोग किया और उसी के चलते उनके बयान के ऊपर में पूरे देश में विरोध हो रहा है, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इसी के चलते एक दिन का सत्र का समय और बढ़ाया गया है। सारा विषय अध्यक्ष जी द्वारा प्रिविलेज कमेटी को दे दिया गया है और बहुत जल्दी जैसी उसकी रिपोर्ट आएगी और फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद में एक स्पेशल सेशन को बुलाया जाएगा और वो रिपोर्ट के बारे में, फॉरेंसिक जांच के बारे में फिर उसके बारे में बताया जाएगा। हमने स्पीकर से मिला, भारतीय जनता पार्टी ने कुकृत्य किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने घटिया और नीच राजनीति किया है।
ऐसी राजनीति जिस पे क्षमा नहीं किया जा सकता। इन लोगों ने फर्जी वीडियो बनाया और फर्जी वीडियो में गुरु साहब का नाम घसीटा। अरे तुम इतने नीच हो गए, गंदे हो गए कि अपनी राजनीतिक फायदा के लिए गुरु साहब का नाम घसीट रहे हो। कपिल मिश्रा की सदस्यता रद्द की जाए, सभी विधायकों जिन्हें ट्वीट रिट्वीट किया उस पर कार्रवाई की जाए और साथ में हमें रॉ फुटेज दिया जाए, पूरा वीडियो दिया जाए और सदन में भारतीय जनता पार्टी के नेता माफी मांगे।